हेलो दोस्तों, एग्जाम भी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और हम बात करने वाले हैं आरबीआई वेबसाइट फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। सब लोग बोलते हैं महान बनो, लेकिन कैसे? यू मस्ट हैव हर्ड एवरी आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट सेइंग आरबीआई वेबसाइट इज द मेका फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. Is it really true? Therefore, in this video, I am going to tell you about what is there in RBI website. Going to answer, is RBI website useful for your RBI grade B preparation? If yes, then how to study from this? And if no, then why everybody recommends? The action point, what shall actually you do and how exam can help in that. अगर RBI grade B आपका ड्रीम है तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं कि आरबीआई की वेबसाइट में है क्या। एंड हियर आई एम टेलिंग यू एन इंटरेस्टिंग ऑफर, बिग बी डे, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। आरबीआई वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीआई, आरबीआई हिस्ट्री, आरबीआई कब बना 1935, डेट ऑल्सो 1 अप्रैल, हिल्टन यंग कमीशन, फर्स्ट गवर्नर सर ऑस्बोर्न स्मिथ, all this you need to know. Prembil will tell you what is RBI about, its establishment, first head office was in Kolkata, central board, departments, establishments, subsidiaries of RBI. These kind of questions are also asked in the exam. Then website tells you about the main functions of RBI. Most of the people know RBI for monetary policy or maybe issuance of the notes. You shall know important functions, whether it is currency issuance, financial market, financial inclusion, बैंकिंग फंक्शन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आरबीआई की वेबसाइट में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। Then you will find information about various circulars and not just the latest but even 10-year-old, and you can go to archives for later years, and these are classified again like master circular, other draft notifications and guidelines. Host of information, department wise master circulars are also there, but hold, not all that is useful for the exam. One most talked about section is frequently asked question. आगे दिखाता हूं क्या गलतियां आप कर सकते हैं FAQs देखने में। एंड देन दिस सेक्शन अबाउट पब्लिकेशंस, एनुअल पब्लिकेशन लाइक एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, हाफ ईयरली पब्लिकेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, क्वार्टरली, बाय मंथली, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स। आरबीआई वेबसाइट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। Apart from those which I showed you, there are speeches by governors, deputy governors, executive directors, memorial lectures, content on financial literacy, financial education. RBI कहता है, अमिताभ बच्चन was also telling in कौन बनेगा करोड़पति. The content on RBI website is huge. The best part is it is updated every day. It is updated every minute. One of the most comprehensive and updated website. अब अगर मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आरबीआई वेबसाइट बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर इज यस। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यह है, ये सारी जानकारी क्या आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए काम की है? आंसर इज नो। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए हमें क्या करना है? Let's come to the structure of the exam so that you can pick pulse from the ocean. आरबीआई की वेबसाइट तो समुंदर है, आपको मोती ढूंढने हैं। फेज 1 एग्जाम की अगर हम बात करें, इसमें आपका क्यूआरई है, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें मैं बोलूंगा आरबीआई की वेबसाइट की आपको कोई जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू वेयर यू कैन गेट इट at one PDF on a weekly and monthly basis. Phase 2 की अगर हम बात करें, there are 3 papers: economic social issues, descriptive English, finance and management, all 100 marks. This is going to be counted for your final selection. इसमें ESI and English में RBI website is really not required. In finance and management it is not necessary again, but selective use will be helpful in few of the questions. But for interview, which is 50 marks, these 350 marks is going to be deciding your selection. So what you score in phase 2 and interview, yes, RBI website is going to be useful here. But again, you are yet to learn how to pick the pulse in the ocean, how to study from the RBI website without getting confused in the plethora of the information. Let me show you those sections here. एक important चीज है लेटेस्ट पॉलिसी एंड अनाउंसमेंट से रिलेटेड टू
पॉलिसी रेट रेपो कीप्स ऑन चेंजिंग। आरबीआई ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में चेंज नहीं किया था, उससे पहले लगातार चेंज करता जा रहा था। एंड एसएलआर इट वाज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, नाउ एट 18%। एवरी बुक विल डू दिस मिस्टेक बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है कि बुक अपडेटेड होएगी। देन द वेबसाइट इज यूजफुल फॉर द ओवरव्यू ऑफ द आरबीआई वेरियस फंक्शंस। Only understand the basic things. You are not supposed to be an expert on RBI matters. एग्जाम क्लियर करना है आपको, आरबीआई का गवर्नर बनने नहीं जा रहे हैं अभी। मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा भी जो सारे फंक्शंस हैं वो आपको समझ में आएंगे। एंड एफएक्यू की प्रॉब्लम यह है, दीज आर नॉट रेगुलरली अपडेटेड। यूज दिस सेक्शन विद लॉट ऑफ डिस्क्रिशन एंड केयर। इट मे समटाइम कंफ्यूज यू, इवन गिव यू एन ओल्ड इन्फॉर्मेशन। लेट मी शो यू सम। ये प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन है FAQ में लिखी हुई, which is not updated. This weaker section is also now 12%. For foreign bank PSL, this 32% and 8% was not mentioned there. Similarly, NBFC classification देखिए जनवरी 2017 में अपडेट किया है, बोलता है FAQ, while even RBI classified NBFC separately in February 2019, which may not be immediately updated on the FAQ section. CRR एग्जाम्पशन का एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे FAQs को अपडेट कर लें। ऐसे ही TLTROs आरबीआई लॉन्च करता जा रहा है और उसमें नए नए एग्जाम्पशंस और गाइडलाइन देता जा रहा है। यूज these FAQs very very carefully. You go to the what's new section and here these speeches by governors, deputy governors can be helpful because you will get to know what is in the top of RBI's mind, what is most important to talk in the interview. So प्रश्न ये रहता है कि क्यों फिर हर आदमी RBI की वेबसाइट को रिकमेंड करता है? Because it is really a valuable source of information. However, all this information is not required for RBI Grade B exam. एक चीज जहां पर मैं बहुत स्ट्रेस देके कहना चाहूंगा, which is a misguidance by many people, that you shall read RBI circular. I am completely against that thought because all people, those who are recommending that, have not gone through RBI circulars. In my 3 years work experience in banking supervision department, I have read hundreds of circular, thousands of pages. These circulars are meant for regulated entities, maybe bank, NBFCs or payment companies, but not for a candidate appearing in the exam. One circular, 200 page, 300 page, lot of annexures. So complete no to downloading circulars and reading from there. All important information you get in newspaper. नहीं तो मैं बताता हूँ आखिरी में. And then many people say RBI website has FAQ section. There also you have to be very very careful. These questions are for market participants. जैसा मैंने पहले आपको दिखाया, बहुत बार क्वेश्चंस के आंसर्स अपडेटेड भी नहीं है एंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। ये प्रश्न कैंडिडेट्स ने नहीं पूछे हैं, ये बैंकों ने, एनबीएफसीज ने, या जो कंपनीज है मार्केट में उन्होंने आरबीआई से पूछे हैं। देन पीपल से आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मे बी ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग। Somewhat important, not really that you are supposed to go to the entire report. The important thing from the report is always covered in media, and maybe you can come to the summary because that gives you an overview of what is happening in the sector. Data anyhow becomes old, and if I am talking about RBI Grade B journal, financial stability report mein there are so many simulations, stress testing, models. You need not to understand how these models are calculated and what kind of assumptions they have taken even after becoming RBI Grade B officer. I am talking about RBI Grade B journal. Most of you are not going to work in these research and analytics related work in RBI. अगर आपको बहुत ज्यादा ही उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप चैप्टर समरीज देख सकते हैं. Then why everyone recommends it? Well, it's all about fine prints. What they really mean to say is read it, follow it with discretion and selectively. Sometimes fine prints are most important. Now coming to the part, what shall you do? For RBI Grade B preparation, RBI website is a good resource. Yes, it is, but it is no panacea. It will help you in making your career, in talking in interview, in broader understanding the things, but not necessarily to clear the exam. Remember, it can be a supplementary resource, but not your primary resource for
for RBI Grade B exam. Now coming to the last part, how iExamB can help you. We at iExamB provide you BPedia weekly and monthly in PDF format, which has both current affairs and static information at one place in a very crisp manner. This PDF you can download from the website for free. You can see chapter wise all important things for the exam will be covered. Instead of reading long circulars at RBI website, you can read the summary here, which is most relevant and prepared for the exam purpose, and also the static information. See, learn about Reserve Bank of India. So these static information is also provided in this. And only at iExamB there are faculty members, those who regularly read RBI website and provides you updated and relevant information in form of MCQs and notes. Live sessions are also conducted by faculty members on daily basis, where you discuss the strategy to crack the exam. Separate faculty for phase 1 and phase 2 that provides you a complete online learning place. We at iExamB provide you all mock tests for free. Every question is selected for one particular exam. This test your preparation level and the answer explanation. You must do that. If you spend 1 hour in doing the test, you may have to sometimes spend 2 hours in understanding the answer explanation to improve your learning. These are provided for free, and only at iExamB you have not only highest number of subject matter experts for quant, reasoning, English, descriptive English, finance, management, economics and social issues, but also most qualified people, those who have industry experience and experience of coaching thousands of successful candidates. With the help of the expert like Prashant Saran sir, Rachna ma'am, Deepa ma'am and selected candidate like Shantana Panda, Ashutosh, Naveen, Akash, Pramod Tiwari and many others, we provide you genuine strategy guidance. हम कभी नहीं बोलेंगे आपको कि ग्रेड बी बनने के लिए आप आरबीआई के सर्कुलर पढ़िए, और जब फोकस बहुत क्लियर होता है तो सक्सेस भी आती है. You have any more question, reach to us at 920-5524-028 by WhatsApp, SMS or call. Take full benefit of this offer. Share with your friends. Government exams are made easy by iExamB. Don't forget to subscribe the channel. Press the bell icon. Please don't forget to like and share. Good luck for your preparation.